Hello everyone, my name is Manish Kumar and you are watching Software Circle. Today I came up with another video by continuing the development of our e-commerce website, web application. Today we will learn I just click on F5 just to have a look that we are on the same page and it is there where we had last developed. And I also show you where we have already. I have already checked in everything. So everything is available in GitHub now. You will also find the URL of this GitHub repository in the description. And see, last time we had worked on binding and minification. So that till then, everything is available here. Okay. So let's come to that. Okay. So this is the website we were building. Let's do it for now. Okay, so today we will add a database project in our solution. So you may ask what is database project then. So first I quickly add it, then I'll describe what is it. So to add project database. Yes, SQL Server database project. Since our background database will be SQL Server, so I'm adding this one. So it says a project for creating a SQL Server database. I click on next. Okay. Database. Page database. Okay. So see, I've hardly found anywhere where people are literally using this feature of Microsoft. So this specific project template literally help us in building the database for our application. So we'll see if multiple people are working, even if you have to share your database bundle with your project to someone, or you are building this project and along with that you are building your database in a SQL Server. Then where will you keep those SQL files? Or it is like it will remain in SQL Server, and whenever you need it, you will just extract it. Is it so? So just to help this all thing, and on top of it, how will you get to know that when something got changed in that SQL? In that SQL which you have run. So maybe other people are also working on the same project where you are working on, and some other people have just made changes and just run on the SQL Server. Maybe you are sharing the database also. Then this is a big trouble. If there is no log available, log in the sense, and it is also if it is kept somewhere. So no versioning is there. Versioning is you will never get to know that what is the history. Has someone changed, or you made something, or someone messed up with the database. So we need something. We need a bunch of scripts to run it at once, and your database what created and your all tables, views, schema, uh, trigger, everything is there. That is something is required. So for this database project is available, and believe me, ये बहुत easy है और ये बहुत helpful भी है. I'll just show you how does this work. So अभी I have a SQL server open with us. So वो मैं last में दिखाता हूँ how does it work. Whether no matter you want to write the script in Visual Studio itself, or you want to use that designer in the Visual Studio itself, or you want to use separately a SQL Server. In SQL Server, maybe you are familiar with working on SQL Server. So no matter at all, just work on SQL Server and just import the whole database. Everything will be here. So I'll just let's see. So database project is there. SQL Server, Server Explorer. यहाँ पे हम ऐड करते हैं डेटा कनेक्शन
ऐड कनेक्शन, सिंस मैं डॉट पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैंने अपना डेटाबेस का नाम रखा टॉपिक डेटाबेस, टॉपिक डेटाबेस। ओके, अब मैं जिस बोलता हूँ ओके। तो सिंस ये डेटाबेस मेरे पास नहीं है मेरे एसक्यूएल सर्वर में, तो ये डेटाबेस पूछेगा कि whether it needs to be created. The database Stockfish database does not exist or you do not have permission to suite. Would you like to attempt to create it? Yes. Since वो नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने बोला क्रिएट करो। अब ये डेटाबेस मेरे पास क्रिएट है, अभी इसमें कुछ एक भी टेबल नहीं है। ठीक है, हम ये डेटाबेस प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में हमें रिक्वायर्ड है मल्टीपल प्रोजेक्ट फॉर दिस ई कॉमर्स वेबसाइट। So first thing that we require in this website, that user. So there will be two types of user at least. So there is a user which may suppose we are using Flipkart.com or Amazon.com. So we are one of the users, so which is called buyer also. So buyer, or if there is another one which who is seller. Seller is selling something on Amazon and we are the buyer, we are buying it. But buyer, seller could also be a buyer, right? So and both of them can be together categorized as user only. So that's why I'm calling it user. तो हमें यूजर की रिक्वायरमेंट पहले ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम अभी यूजर टेबल से स्टार्ट करते हैं, देन लेटर ऑन वी विल keep on creating multiple tables, but we will not create everything once. Whenever we require something, we will, during the project development, we will keep on creating more tables. Okay. Add new table. ये डिजाइनर ओपन हुआ। अभी हम इसमें हम में हम एक यूजर टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने बोला ये आईडी है, तो इंस्टेड ऑफ इंट आई से दिस इज यूनिक आइडेंटिफायर, ये प्राइमरी की रहेगा हमारा। देन विल से नहीं arcar say 200. Do not allow null. I don't want name to be blank. Email arcar say 200. Also same blank. Then file arcar 50 could be null. It's okay, not mandatory. Password arcar max, क्योंकि पासवर्ड हम बाद में हैश करेंगे। ओनली नो प्लेन पासवर्ड विल बी सेव्ड इन द डेटाबेस, ऑल बी हैश। अभी के लिए हम बैकर मैक्स करते हैं इसको। ठीक है, अब एक हम फ्लैग डालते हैं वेदर दिस रिकॉर्ड इज एक्टिव और नॉट। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक्टिव है, अलाउ नाउ। हम इसमें बोलते हैं कि ये डिफॉल्ट इज वन, बाय डिफॉल्ट यूजर को एक्टिव रखो। यहाँ बोलते हैं टाइप, हम बोलते हैं कि भाई यूजर, इस यूजर को ये भी हम इसमें भी करते हैं। So type is like whether it is a buyer, it is just for distinguished purpose. I'm just putting it as a bit, and for any user who is specifically a user, will term it as one. If there is a supplier, will term it as two. So इसका हम enum C# कोड में क्रिएट करेंगे। The user is one, then supplier is seller is two, something like that. जैसे जैसे हमने ये क्रिएट किया, ये हमारे पास ये इसका एसक्यूएल क्वेरी भी क्रिएट होता चला गया। अभी यहाँ पे टेबल है, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं से यूजर। ठीक है, now we'll say update तेरी अपडेट डेटाबेस। ठीक है,
waiting for software database update सक्सेसफुल। ठीक है, अभी हम इसको बंद कर दें। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें, रिफ्रेश यूजर टेबल, सी यूजर टेबल क्रिएट। अभी हम एसक्यूएल सर्वर में जाते हैं। यहाँ पे हम गए, जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर डेटाबेस मिलना चाहिए। यहाँ पे हम टेबल देखेंगे, सी टेबल इज देयर, यूजर टेबल। ठीक है, तो दिस इज आवर क्रिएटेड नाउ। अभी ये तो हमने स्क्रिप्ट बनाया, डेटाबेस ये एसक्यूएल सर्वर में एंट्री हो गई। अभी हमारे पास इस डेटाबेस प्रोजेक्ट का क्या काम है, तो इसके लिए हम बोलते हैं इंपोर्ट डेटाबेस, सेलेक्ट कनेक्शन, सेलेक्ट कनेक्शन, सर्वर नेम बोलते हैं वन, सॉरी डॉट, और यहाँ से हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेटाबेस कनेक्ट, सॉफ्टवेयर डेटाबेस के साथ कनेक्ट। We import application support objects, import reference logins, we'll say start. Import of database schema started. तो आपके पास अगर existing database भी है and you want to create database project and want to be available in your source control, तो आप current आपके existing database पे भी ये try कर सकते हैं। Finish. अभी देखो schema since हमारा DBO है, default ही हमने रखा है, उसमें एक टेबल है, टेबल में यूजर, अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमारा डिजाइनर ओपन होगा और डिजाइनर हमें देखेगा। और ये जरूरी नहीं है कि हमें ऑलवेज डिजाइनर ही देखना है, हम सिंपल जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में देखते हैं कि टेबल का हमें स्क्रिप्ट देखना है तो उस पर भी हम राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं। अब ये डिजाइनर ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी तो ये हमने यूजर बनाया, डिजाइनर हम कर सकते हैं व्यू कोड, तो हमें जो एसक्यूएल का जो स्क्रिप्ट है वो भी हमें दिखेगा। तो ये तो अभी हमने यूजर टेबल बनाया। अभी यूजर जैसे कि हम ई कॉमर्स साइट पे भाई कुछ हमने हमने लॉग इन किया, हमने जब तक हम कुछ बाय नहीं करते, वी डोंट नीड टू गिव आवर शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस और प्रीफर्ड प्रीफर्ड अकाउंट और क्रेडिट कार्ड टू बाय, राइट। अभी वो सब हम तब तक नहीं करते, इसलिए हमने एक यूजर टेबल बनाया है। अभी हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक और टेबल क्रिएट करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम टेबल हमेशा इधर डिजाइनर से ही क्रिएट करें। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक दिखाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, एक स्क्रिप्ट ऐड किया, यस आई वांटेड टू बी इनबिल्ट, यहाँ हम बोलते हैं यूजर प्रोफाइल, प्रोफाइल। अभी हम एक यूजर प्रोफाइल बना रहे हैं, अगर वो यूजर सेलर टाइप का हुआ तो सेलर, अगर वो सेलर हुआ तो इफ इट ही इज अ यूजर मीन सेलर आल्सो कैन कुड बी अ यूजर, तो उसका यूजर प्रोफाइल भी क्रिएटेड होगा, तो भाई मे बी हम उसमें रखेंगे उसका बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस एंड मेनी मोर डिटेल्स लाइक व्हाट इज एज आई सेड, व्हाट इज द प्रीवियस, व्हाट इज द प्रिफर्ड कार्ड यू वांट टू यूज और प्रिफर्ड पेमेंट, preferred payment gateway or ways, anything we can save there। और सेलर प्रोफाइल हमारे लिए अलग हो सकता है कि सेलर से रिलेटेड हम उसका उसमें डिटेल रखेंगे, ठीक है, मे बी सेलर जीएसटी नंबर एंड ऑल। जैसे व्यू कोड, यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। मैं दिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा, क्रिएट क्रिएट टेबल, डी व्यू में ही जाएगा, व्यू प्रोफाइल, राइट।
हम देते हैं आईडी, आईडी प्राइमरी की होता है आपका प्राइमरी की, सेकंड होगा यूजर आईडी, यूजर आईडी हम ये फॉरेन की बनाएंगे इसको, फायर हम इसे बोल सकते, अभी के लिए हम बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस दो ले लेते हैं। एड्रेस एड्रेस मैक्स, ठीक, ये हमने ले लिया। अब हमें कंस्ट्रेंट डिफाइन करना होगा जिसमें हम बोलेंगे कि यूजर आईडी विल बिकम और यूजर आईडी विल बिकम और फॉरेन, तो कंस्ट्रेंट में की का नाम से कंस्ट्रेंट की का नाम दे देते हैं फॉरेन अंडरस्कोर फाइल के साथ आईडी के साथ आईडी सेव करते हैं, ठीक है। अभी इसको हमने सेव किया तो हमारे पास ये अभी कुछ ये नहीं है, राइट। अब इसको रन करने के लिए ताकि ये डेटा हमारे पास आए, हमें सिंपली डेटाबेस प्रोजेक्ट पे यहाँ पे ना पब्लिश क्लिक करना है। पब्लिश cannot begin until your projects build successfully, okay। incorrect syntax near user profile, हाँ ये डॉट होगा यहाँ पे, सीमा डॉट, सर EPU सर प्रोफाइल टेबल, हाँ ठीक है। अभी पब्लिश, ओके बोलते हैं डेटा होगी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आया तो जस्ट से क्रिएट प्रोफाइल, एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस डॉट पब्लिश XML का प्रोफाइल क्रिएट हो गया। डेटाबेस में हमारा ये बोलते हैं पब्लिश, पब्लिश कंप्यूटर सक्सेसफुल, ओके चेक करते हैं फ्रेश प्रोफाइल, हम डेटाबेस में भी चेक करते हैं रिफ्रेश कॉलम प्रोफाइल कॉलम फॉरेन की भी, ठीक है। ओके तो अब कोई भी कुछ भी चेंज करता है, सिंस ये हम एक बार सोर्स कंट्रोल में चले गए, हम ऑलवेज को हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं किसने क्या चेंज किया, कब चेंज किया। एंड हमारे पास अगर डेटाबेस नहीं भी है फिर भी ये हम प्रोजेक्ट किसी कोई भी न्यू पर्सन सेटअप हिज ओन सिस्टम फॉर दिस प्रोजेक्ट,
he will just get this project from source control and you would just run this, just publish this, It will ask for uh, the profile to load, but currently in our profile, say, I'll say XML editor right now. See, so currently this profile has my local database address. So anyone who is taking you just need to change the database setting as per his local settings, and we're good to go. Just publish it, database with everything, all schemas got created. Now, many times we have seed data, like for us, one admin has to be there for this e-commerce portal. So how will it be there? Even and also when if we are changing any schema with the data inside our database, then what happens? Once we try to publish it, it will throw error because schema cannot be changed because data is there. तो अभी इसके लिए हम इसको ऐड करते हैं इस प्रोजेक्ट में, ऐड न्यू आइटम प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट और ऐड न्यू आइटम पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हमने यहाँ दो स्क्रिप्ट ऐड किया, प्री डिप्लॉयमेंट एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट। अब नाम से ही पता चलता है, अब जब हम पब्लिश करते हैं तो स्टार्टिंग में प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट रन होगा, देन पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट रन होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट में हम एक यूज करते हैं कि चलो इसमें हम पहले से कुछ तो हमें चाहिए, उस समय सॉरी नॉट ऑन प्री पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट में हम कुछ डेटा डालते हैं कि सीड डेटा, भाई पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट में एक बार ये डिप्लॉय हो गया, सारे एसक्यूएल फाइल सारे टेबल बन गए, उसके बाद मुझे सीड डेटा एंट्री करो। तो इफ यू रीड दिस, we can also have a separate file for seed data and just have it execution code here, and this once all schema gets created in our database, then that file will be run. Currently हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसमें ही लिखते हैं post deployment script what should happen। तो just लिखते हैं, नहीं ये लिखा, अभी देखो यूजर आईडी सॉरी यूजर टेबल में हम एंट्री कर रहे हैं आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, इज एक्टिव एंड टाइप। तो हमने यूजर आईडी दिया, एक ग्रुप क्रिएट किया मैंने, वो डाला मैंने, नेम डाला मैं हमने सॉफ्टवेयर एडमिन, देन ईमेल आईडी डाला हमने softwarecircle@gmail.com, देन हमने मोबाइल नल छोड़ा है अभी, पासवर्ड अभी हम हैश नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम सिंपल प्लेन पासवर्ड दे रहे हैं टेस्ट, इज एक्टिव रहेगा वो, और टाइप इज 1 टाइप ऑफ यूजर फायर। ठीक है, ये हमने यहाँ सेव किया। अभी टू सी सेलेक्ट 1000 रोज, सी नथिंग इज देयर। ओके, अब हम जैसे इसको पब्लिश कर लो, पब्लिश द प्रोफाइल, पब्लिश, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी चेक करते हैं, अब हमारे पास सीड डेटा है, कभी भी ये रन होगा हमारे पास एक सीड डेटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब हमने मे बी यूजर टेबल में हमने स्कीमा चेंज किया, तो जैसे ही ये सीड डेटा रन करने जाएगा वो फटने वाला है। ठीक है, तो या फिर स्कीमा चेंज किया हमने और हमारे पास इसमें डेटा है अगर, तब भी वो ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो या तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो they will see the error and based on that they will clean up their database and they will
after cleaning up or backing up the data, they will run this script and they can reinsert that. That is one thing. Another is that, see, you have to bear in mind that whenever you are publish this project, it means that it will be a vanilla database. Vanilla means whatever is developed till now, and with the seed data that will be there in your database once you publish it. You will go with that. प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट में सिंपल हम लिखते हैं, प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट में we delete from preview dot user and we'll just write save. अब हम अगर कुछ भी चेंज, अब what I see, I'll just change something here. Edit. Test again. रन कर, ठीक है, पासवर्ड हम चेंज कर चुके हैं, टेस्ट अगेन नाउ हम तो वापस पब्लिश करते हैं। अभी ये पब्लिश करने पे क्या होगा, पब्लिश करने से क्या होगा, प्री डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट पहले रन होगा, ये डेटा डिलीट करेगा यूजर टेबल का, देन ये स्कीमा रन होगा, डेटाबेस नहीं है तो सॉरी डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा, ये सब अगर पहले से तो कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे कुछ भी चेंज है तो वो चेंजेस करेगा, देन पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट लास्ट में रन होगा और ये इंसर्ट कर देगा, ठीक है, पब्लिश। प्रोफाइल पब्लिश ओके। तो अभी ये पब्लिश कंप्लीट, अगर हम इसे रिजल्ट देखना चाहिए या कभी कुछ एरर हुआ तो हमें जस्ट यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ये हमें पूरा स्क्रिप्ट जो भी है एक पूरा स्क्रिप्ट क्रिएट करता है और वो एक साथ वो रन करता है हमारे डेटाबेस में। एंड मीनवाइल व्हेन टाइम इट ओपन, जस्ट इसको रन करके देखते हैं, सी तो वापस सी डेटा रन हो गया, सब डिलीट होकर वापस सेम हो गया, और ये पूरा डेटा क्रिएट करता है, एट द एंड ये एग्जीक्यूट भी करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। अब anyone who is working with this, no matter at all, अभी आपके सारे स्क्रिप्ट्स एक ही जगह पे, कुछ भी आपको अलग से एसक्यूएल फाइल या फिर आपको डेटाबेस बैकअप कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इवन there are multiple, I mean huge data, I mean huge seed data, not huge basically, maybe आपका 100 or 1000 records हैं उसमें, वो भी आपको चाहिए तो you may have it at folder created here and get that folder run in post deployment script। तो आपकी डेटाबेस क्रिएट होकर सारा का सारा डेटा रन हो जाएगा उसमें और हमारे लोकल डेटाबेस में अवेलेबल रहेगा। ओके, ठीक है, ये अभी मैं ये प्रोजेक्ट भी सेम सॉफ्टवेयर सर्कल गिटहब पे ये चला जाएगा और आपको वहां से आप ले सकते हैं। देन ये जैसे हमने एसक्यूएल जब से हमने यूजर डेटाबेस क्रिएट किया, नेक्स्ट टाइम सिंस ये अभी हमने स्क्रिप्ट के थ्रू हमने एंट्री की है न्यू यूजर क्रिएट करने की, तो नेक्स्ट टाइम अभी हम सी शार्प के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि विथ दिस रजिस्ट्रेशन पेज, if we see we have the registration page, through that हम ट्राई करेंगे जो हमने CSS इम्प्लीमेंट किया था उससे हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम रजिस्टर करें और ये हमारा इस टेबल में हमारी टेबल डेटा की एंट्री हो with all validation and all। Okay, till then that's it for this video, thank you।